In the previous video, we have completed the mechanism of muscle contraction. And now in this video, we are going to learn the myoglobin pigment. So myoglobin pigment is the topic. Then what is myoglobin pigment? तो इसका आंसर होगा कि मायोग्लोबिन पिगमेंट इज अ रेड कलर पिगमेंट स्टोरिंग ऑक्सीजन और रेड कलर ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट उसे कहते हैं मायोग्लोबिन पिगमेंट जो मसल फाइबर में या मसल सेल में होता है। व्हाट इज मायोग्लोबिन? मायोग्लोबिन क्या है? मायोग्लोबिन इज रेड कलर। कैसा है? रेड कलर। दूसरा, ऑक्सीजन स्टोरिंग क्या काम करता है? टू स्टोर द ऑक्सीजन, इसलिए कहा ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट। एंड दैट पिगमेंट इज कॉल्ड, उसे क्या कहते हैं? दैट पिगमेंट इज कॉल्ड मायोग्लोबिन। तो मेरी क्लियर क्या है मायोग्लोबिन? मायोग्लोबिन इज अ रेड कलर ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट प्रेजेंट इन मसल फाइबर, उसे कहते हैं मायोग्लोबिन। अब मसल फाइबर के अंदर मायोग्लोबिन का कंटेंट कितना है? मसल सेल, और यू कॉल्ड इट एज अ मसल फाइबर। कंसीडरिंग द कंटेंट ऑफ मायोग्लोबिन present in muscle fiber, these muscle fibers are divided into the two groups. कौन से? फर्स्ट वन इज रेड मसल फाइबर एंड सेकेंड वन इज व्हाइट मसल फाइबर। तो वेरी क्लियर क्या कहा कि मसल फाइबर में मायोग्लोबिन पिगमेंट का कंटेंट अमाउंट कितना है? ऑन दैट बेसिस दिस मसल फाइबर इज ऑफ टू टाइप, वन इज रेड मसल फाइबर, सेकंड वन इज व्हाइट मसल फाइबर। सो दिस इज considering the content of myoglobin. First one is red, you call simply called it as a red muscle, or it is also long hair, इसलिए that muscle cell is called as muscle fiber. So red muscle fiber, and second one is white muscle fiber. White muscle fiber. पहले कहा कि क्या कि डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ मायोग्लोबिन प्रेजेंट इन मसल फाइबर, रेड मसल फाइबर एंड व्हाइट मसल फाइबर, इन रेड मसल फाइबर देयर इज हाई कंटेंट ऑफ मायोग्लोबिन। क्या है? रेड मसल फाइबर में मायोग्लोबिन का कंटेंट हाई है। And because of high content of myoglobin, these muscle fiber gives the appearance, कैसा appearance है उनमें? Give the appearance reddish, कैसा appearance? Reddish, and therefore उसे क्या कहते हैं? Red muscle fiber. अब second point in muscle fiber, high quantity of or high number of mitochondria is found in red muscle. क्या है? नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कैसा है? हायर और हाई नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर कैसा है? हाई नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो क्यों है हाई नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया? बिकॉज इट स्टोर द ऑक्सीजन, राइट? अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? माइटोकॉन्ड्रिया यूटिलाइज द ऑक्सीजन स्टोर्ड इन देयर, उनके अंदर जो ऑक्सीजन स्टोर हुआ है उसको यूटिलाइज करके माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस द एनर्जी, एंड देयरफॉर हाई नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? माइटोकॉन्ड्रिया यूटिलाइज स्टोर्ड ऑक्सीजन फॉर ATP production by aerobic respiration. Hence, these red muscle fibers are aerobic muscles. These are aerobic muscles. Right. Another important thing considering the sarcoplasmic reticulum.
Sarcoplasmic reticulum मतलब the endoplasmic reticulum present in muscles. These red muscle fibers have low sarcoplasmic reticulum. Sarcoplasmic reticulum कैसे है? Low sarcoplasmic reticulum. So this is all about the red muscle fibers. In short, फिर से कहता हूँ क्या है कि considering the amount of myoglobin present in muscle fiber is of two types. First one is red muscle fiber and second one is white muscle fiber. So first is red. तो मैंने कहा क्या रेड में in red muscle fiber there is high content of myoglobin. First point. Second one is because of the presence of high content, red muscle fiber gives the appearance कैसा reddish appearance देती है. इसलिए उनको कहते हैं red muscle fiber. Third point, in red muscle fibers, high number of mitochondria. And mitochondria क्या करती है? Mitochondria utilizes the stored oxygen in them for ATP production by aerobic respiration. Hence, these red muscles are called aerobic muscles. Red muscles कैसे हैं? Aerobic muscles. They utilize oxygen and carry out the aerobic respiration for the ATP production. थर्ड जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है दैट इज लो लेसर इन नंबर उनका काउंट कम है सो दिस इज ऑल अबाउट रेड मसल फाइबर व्हिच इज नेक्स्ट वन इज व्हाइट मसल फाइबर नेक्स्ट वन इज व्हाइट मसल फाइबर सो व्हाइट मसल फाइबर में मायोग्लोबिन कंटेंट कैसा है दे हैव लो मायोग्लोबिन कंटेंट कैसा है लो मायोग्लोबिन कंटेंट अमाउंट ऑफ मायोग्लोबिन व्हाइट मसल फाइबर में कम है लेस है एंड बिकॉज ऑफ दैट लो मायोग्लोबिन कंटेंट दिस गिव्स कैसा अपीयरेंस देते हैं गिव्स अपीयरेंस कैसा गिव्स अपीयरेंस पेल व्हाइट और whitish कैसा pale white और whitish here reddish first point second comparative point जो है they have high number of mitochondria they have low number of or they have less number of mitochondria इनमें माइटोकॉन्ड्रिया का काउंट नंबर कैसा है कम है लेस है and these muscle fiber produce energy by anaerobic respiration. Then these produce energy. Energy मतलब ATP produce energy by anaerobic R for respiration. anaerobic respiration से वो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं इसलिए व्हाइट मसल फाइबर्स आर अनएरोबिक मसल्स कैसे है दीज आर अनएरोबिक मसल्स रेड कैसे है एरोबिक मसल्स ये कैसे है अनएरोबिक मसल्स दैट इज द थर्ड पॉइंट देन द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो अनएरोबिक मसल्स में होता है दे हैव हायर नंबर ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम then fourth one is they have high sarcoplasmic reticulum उनमें sarcoplasmic reticulum कैसा है high so this is all less content of myoglobin because of less content they use the whitish appearance number of mitochondria less they produce energy by anaerobic respiration therefore these muscles are anaerobic muscles एंड उनमें सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसा होता है तो ज्यादा होती है हाई नंबर ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम सो यू कैन कंपेयर रेड मसल एंड व्हाइट मसल क्योंकि तो प्रीवियस वीडियो में भी मैंने कहा है कि नीट में जो क्वेश्चंस आते हैं वो मोस्टली कंपैरेटिव क्वेश्चंस आते हैं सो डू कंपैरिजन हियर वी कंप्लीटेड द myoglobin in the next video we'll start the new chapter that is locomotion and movement.